Okay, please introduce yourself. Yes, sir. Good morning, sir. Myself, Pallavi Avinash Varankar. I have completed my graduation, and from the last 3 years, I'm working with the Infosys. As a test engineer, I have some roles and responsibility in my organization, like the information, understanding the information or the requirement analysis, then writing the test scenario, then preparing the traceability matrix, as well as logging the defect into the Jira, as well as our organization follow the agile methodology. And I have got the chance to work on the IB project as well as the telecom project. And for that, we are using the Jira as a project management tool and the HPLM as a project management tool. I also work on the Unix and SQL. That's all about me, sir. Okay, so can you please tell me which are the different scenarios you work on for I investment banking project? Different scenarios. Okay, I'm working on the UI of the application, as well as we are working on the product type, order type, um, as well as yes, sir. Yeah, scenarios in the sense, my question is for example, if you're working on any particular functionality, okay, so in that Okay. functionality, definitely you have written some scenarios. For example, let me take an example of like for a login. Let's say for a login, how it should be done for valid, invalid. Similar way, I think you work for a different modules there, right? Yes. Consider any module, or like let's consider what happen if vendor will do the login, what happen if a user will do the login, right? What happen if broker will do the login? So these are the different scenarios. Have you written scenarios, these kind of scenarios for your project? Yes, sir. Yeah, Uh, like these scenarios. okay. Let's consider the scenario for the order type, sir. User should select the different order types. There is a one screen, and there are different types of orders, like a market order, limit order, stop loss order, GTT order, and one cancel another order. Then user should place the order for the market price. User should place the order for the limit price, as well as user should place the order for the stop loss price. User should place the order for the GTT order. Uh, User should place the order for the one cancel another type, sir. These are the scenarios. Okay, let me give you one scenario, like for any project, for your project in terms of investment banking project, what happen if there is any customer is a new customer for that application? He is using this application first time. Okay. In that case, In hello, that case, what, sir? Yes, sir. am I audible to you, Pallavi? Yes, sir, you are audible. Okay, so let's suppose your investment banking project, let's suppose the customer is a new customer in the sense he's the first time using that application. Okay. What do you think, what would be scenario, what are the different scenarios for this customer who's using this application first time? What come into your mind for? I think the UI of that application should be the user friendly. He can see his profile into the at the whenever he log in into the application. He can see the watch lists as well as the order types, the product types, the graphs. Everything is at on the one screen, so it can be the user friendly to him to see his portfolio, his position, as well as he can see the trade. Everything is in at one screen. Okay, so can you tell me about that Amazon search bar test scenarios? So what are the things that you will test over there? Yes, sir. Uh, First, I will check that there is an input domain testing, sir. How type of data the search functionality, the search tab is accepting. Then verify that the user should can search by using the characters into the search tab. Then user should see the how long or the how long he can enter the
characters into that search tab and he can search. Then verify that user is able to search with the any uh, particular numbers or not. Then verify that the length of that data and verify that the which type of data actually user should use while he searching any product or anything into the search tab. Um, then verify that if a user should search the two multiple things, what the result comes. Search some woman clothes and as well as some searching for the main clothes at the Mhm. same time. Then whatever the output is come, uh, uh, Okay, we so can see that. let's say there are let's say in output there are 100 records. Okay, so like Mhm. for example, it mixture of women's and men's clothes. Okay, so in database, how you will verify which query you will use to verify that whatever the data on front end it gets fetched is matching with the database or not. So how you will confirm that then? I will use the command like select Hmm. woman clothes comma main clothes Hmm. from the whatever the table name is and Hmm. semicolon. So it will show the columns, right? Select Right, women's sir. clothes, comma, men's clothes. It will show the columns, no? It will print the column names only, no? Where is the filter criteria? Whatever the data is stored into the database, we give the command to the front end and then we see how it fetching So from the command you backend. mentioned that ki select women's cloth, men's cloth from Hmm. table, right? From table. Right, sir. So it will fetch all the right. So do we need to, but त्या टेबल मध्ये तर सगळेच असतील ना, like kids section or other accessories as well. You need to search for specific clothing, right? Yes, no. Yes, sir. So for that we have a different column names, na sir. Okay, Woman fine. clothes. Okay, fine. Uh, okay, so just consider that Amazon website, okay, clothing website or uh, in general. Okay, so can you think of all four categories of the defect? Like, I want to know what will be the high priority, high severity, high priority, low severity, or likewise. For the searching functionality or Okay, searching functionality. Good to go. So, what will be the defects? uh, only for the woman clothes, Overall, clothing. overall clothing. Yes. Okay. Then if you find out the particular kurti set, kurtis for the women's, and you can search it by the kurti, and you can see the result of the night dresses. Then Okay. it is high priority and high severity Okay. defect, sir. Yes. Good. Then suppose if you find the kids dresses and if you find for the particular t-shirts, but if you see the full set of the t-shirt and pant, so I think this is the low priority and low severity defect. Okay. Then suppose if you try to find out the if you find out the particular mobile series, but it's showing you the results with the mobile as well as the laptops of that particular brand, then it should be the high severity but the low priority. Okay. Okay. Fine. Can you explain me agile in detail? What do you mean by agile? How it works? How you guys are following in your organization? Yes, sir. Yes. So yes, sir. My organization following the agile methodology where the cross-functional team and the self-sufficient team works together to developing the application. And we have a epic and we are converting that epic into the product backlog or the different requirements. And we are creating the sprint and we are taking the our requirements into that particular sprint.
So basically, our sprint has duration of the 4 months. It depends upon the complexity of the project actually. So for that, we have conducting the daily status meetings as well. Basically, we are started from the creating the product backlog into the agile. For that, we are using the Jira tool as well. Then we are creating the sprint backlog. Into the sprint backlog, sir, we are writing the user stories. Then We we are do the writing a user story. What does it mean? not actually writing, but we are Mhm. creating the user stories from Okay. the product backlog, which is converted into the sprint backlog. Then we go for the STLC process for that, sir. After that, we are understanding the requirements. Then we are writing the scenarios. Then we are designing the test cases. Then also we get it reviewed from our colleagues, from our development lead and test leads. Then we go for the preparing for the traceability matrix. Also, we are preparing the traceability matrix into the Jira. Then we go for the execution. Thus, we are giving the quality software product to the customer by using the agile methodology. Also, there are 4 types of meetings, like sir, that is a planning meeting. Then a daily setup meeting is as well is there, and there is a sprint review meeting and a retrospective meeting. And one another meeting is, we call it as a grooming meeting, which grooming meeting is held according to the need. It is all about the product backlog, where the development team and the testing team and the product owner is involved. They basically talk about the product backlog. Means the product backlog is a prioritized clearly, or it defined clearly. So can the our team is working fine when the sprint planning meeting is going on. So these things are all the happen in our organization. Okay. What is BVA? BVS is the one of the test case design techniques, sir. It stands for the boundary value analysis, which is applicable for the text box. So how it is useful for making a test cases? Can you elaborate? Yes, sir. Suppose we have any text box. Mhm. Suppose there is any name text box. How long the characters it whenever we entering any character to that text box, how it should take, how long it should take, and which type of data it accepting. Thus, we can check the boundary value analysis, sir. Okay. What are the other test case design techniques that you are aware of? Boundary value analysis is there, Mhm. equivalence class partition, Mhm. then decision table technique, then Mhm. state transition technique, and Mhm. the error guessing technique. So What is error guessing technique? error guessing techniques means, suppose you are entering any invalid data to any text box, then it gives you the error. Means suppose there is any amount field, and the requirement is that the amount field is accepting only the whole number, and you are entering the decimal number into that amount field, then it gives you the error. So this is the error guessing technique, sir. But there is no need of any technique. It's all about your analytical skill. Okay. So coming back to my question, Pallavi, because of network issue have dropped. So as I said to you, like you're working on your investment banking project, and you already told me some scenarios. What if, like, if that customer, the end user, is a new user who's using first time that application? Mhm. Okay. From that perspective, what do you think? Like, what is the scenario come for this user? I think, sir, whenever he log in into the application, he can see the UI of that application. It should be the user friendly. It looks the pleasant for the new user. Whenever you can open the new screen, it should be the user friendly to the that new customer, sir. See, scenario which you have told me, like it's related to, all are related to orders, which are correct, nothing wrong into that. But apart from that, like, okay, apart from that order, don't you think like there are different scenarios? Like if the user is new user, if that user is an old user, if uh, there is a different kind of access, like we can say that if it's a broker access, it's an admin access, it's a vendor access. In that case, what do you think? Like from that perspective, I'm expecting scenario from your end. Means, sir, you wanted to say that if any
let me vendor help you. is and Let me help you. कोई भी सिनेरियो आप जब बता रहे हो, ठीक है, अब इसमें एक चीज होगा कि अगर वो बंदा नया है एज अ न्यू कस्टमर, तो might be he's getting discount because first time वो यूज कर रहा है, he's getting some coupons, right? Kind of Okay. coupon वाला सीन हो सकता है यहाँ पे। पहली ऑर्डर प्लेस करते हो, सिमिलर काइंड ऑफ लाइक स्विगी जोमेटो, करेक्ट? Okay. Another scenario we can say that if he's like executing any order, then scenarios related to tax deduction वाला भी scenario आपको consider करना है, right? So जब भी आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि like if he ask you like tell me the scenarios, definitely आपको आपके मार्केट ऑर्डर ये सब कवर करने हैं, no doubt आपने कवर किया, but apart from this you can also cover if it is a new customer, if it's an old customer, if he's placing an order, he'll get the tax benefit. Means tax should be also considered, कि tax को कैसे consider करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। And yes, from different rights, मतलब क्या होगा, देखो सिर्फ एंड यूजर ही उसे लॉग इन करेगा ऐसा नहीं है। एक होता है एडमिन राइट्स अलग होते हैं, ठीक है। वेंडर इन द सेंस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है काइंड ऑफ दिस, उसका एक्सेस अलग होता है। सो यू नीड टू चेक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है, कि वो अगर कर रहा है तो क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ओनली, let's suppose you are doing compatibility testing on your IB project. Your IB project is there and you are doing compatibility testing. Tell me what you will do in that. In compatibility testing, I am testing my application that it works fine into the old version as well as the new version. Okay. Apart from that, that is only the compatibility, Pallavi? As well as we can see that which different operating systems it should be means you can open it on the Chrome as well as you can open it on the Firefox. So we can check also that, sir. There is a cross browser testing is also there. So we can see that the page validation, link validation. Okay. So you said that old version, then cross browsing and different operating system. Yes. Correct. These all points are correct. Apart from this, I would suggest to add few more points. Compatibility में आप ये भी देखो कि what if that person is using on laptop, okay? Right. If he is using on laptop, if he is using on desktop, if he is using on mobile, that is also compatibility, right? वो application कितना compatible है बाकी चीजों में, ठीक है। I know you are coming with the syllabus. This is something I request you to add there. उसमें थोड़ा ये और भी add करो। जो आपने बताया, no doubt it's correct, it's completely correct. ठीक है, इनमें ये चीजें डालो आप, ताकि we can't restrict someone to use on laptop or desktop. Might be using on some. Okay. Right, sir. Okay, fine. So what do you understand from the test closure activity? Test closure activity is one of the documents, sir, which we give to the customer. And in that test closure activity, we return all the test cases we have written, all the test cases we are, which test cases we are executed, which test cases are remain to be executed, whatever the defects we have found, whatever the defects we have closed or rejected so by the developer. You are saying that whichever the test cases remaining also come into the test closure? Yes, sir. Okay, when you are doing this test closure activity? After the test execution. So it means nothing is pending, right? Yes. But now just you say that the remaining test cases will come into test closure. So in your organization, are you preparing test closure or your lead is doing this? Our lead is doing that, sir. Okay, so I suppose to you having 3 years of experience, are you helping him to doing that or he's doing alone? Yes, sir. Sometimes I also helping him to doing that. Okay, so how you contributing to him? Like how you helping him? I just give the information that whatever the defects we have found and whatever the defects we are closed and rejected. So I just give the
thoroughly the information to the person. Okay, so tell me the challenges in testing. Yes, sir. There are a lot of challenge in the testing. Sometimes there is a configuration problem, hardware software problem. There is a communication problem between the tester and the customer, as well as sometimes we are testing the application into our operating system, but it not supported to the most of the time it's supported, but sometimes it happens it not supported to the customer's operating system. Most of the time we are raising the defect to the developer, but that defect is not reproducible by the developer, as well as sometimes we are Okay, so don't even you think that updating the test cases, let me add you one more challenge here. Mhm. ठीक है, आप add कर लेना. Updating the test cases regularly is also the one of the challenge. You can't use same test cases again and again. Yes, As per the application changes, we need to update it. yes, sir. So this is also one of the challenge. Whatever you said, that is completely correct. Okay, Yes, sir. this is new additional. So Yeah. let's focus on that area. Okay, I forgot to ask you this question. Fine. So let's suppose I have given you a new application for a testing. Mhm. How you will test it? Application is ready and you give it to me for the testing. Uh, Ready in the sense, yeah, you can test it. I can't say that it's completely ready, but yeah, it's working. It's working. Okay. Complete. Yeah, Uh, it's ready in production. yes. Then firstly, I will go with the login functionality as well. I'm checking that the login, giving the valid credential, it get logged or not. Even though I can see that if I give the valid password, but the invalid valid username, but the invalid password, it should not crash. It just show me the error. Uh, but it should not log in also. No, After. no, Pallavi, no, will not test in this way. नया एप्लीकेशन आपको दिया है, ठीक है. Mhm. आपको आइडियली यहाँ पे बताना है कि आप किस टाइप की टेस्टिंग करोगे, आप क्या अप्रोच रखते हो. Whenever you receive any new application, you not Mhm. directly say कि मैं इसमें लॉगिन में जाऊंगी, ये करूंगा. This is very common way, but this is like बहुत ये है डिफिकल्ट वे है, क्योंकि एक्चुअल एप्लीकेशंस कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है. Okay. सो इस तरीके से काम करना लाइक विल नॉट वर्क. सो यहाँ पे हमें स्मार्ट आंसर एक्सपेक्ट रहता है कि आप किसी न्यू एप्लीकेशन, देखो अभी ज्यादातर लोग यहाँ आंसर क्या देते हैं, आई विल डू एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. वो भी एक आंसर हा करेक्ट है, राईट. राइट. या म्हणजे मी सांगणारच होते सर ते की ओके, बट नो प्रॉब्लम. हा बट राईट. उस आंसर को भी हम बीट कर सकते हैं बाय सेइंग दैट why not I will check the previous version of that application if we have. ठीक है, जो राईट. क्योंकि क्या है, अभी जो एप्लीकेशन रनिंग है, अगर मैं उसको टेस्ट करूंगा, चेक करूंगा, तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी है या बग है, बिकॉज इट्स इन रनिंग मोड, राइट. It's in राईट. running mode. So why not I will ask my team if we have older version on any machine or anywhere, I should check. उससे क्या होगा कि आई एम डैम श्योर कि ये फंक्शनलिटी मुझे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी. अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यू कैन ऐड दिस थिंग. ये भी उसमें आप ऐड कर सकते हो कि अगर पुराना कोई वर्जन है, कोई पुराना उसे लेगेसी एप्लीकेशन बोलता है. लेगेसी, देयर इज अ वर्ड. इफ देयर राईट. इज एनी लेगेसी एप्लीकेशन, यानी पुराना है, एक वर्जन बैक, तो हम उसे यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है. राईट. ओके, Means you need to tell only the whatever the different testing activities you performing, like your usability testing, then error guessing, like this. आप ऐड कर सकते हो, बट स्टार्ट कैसे करो. आई विल डू द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इफ देयर इज एन लेगेसी एप्लीकेशन अवेलेबल. आई विल डू द I will work on it, okay, and then I will use different test case design techniques. अब test case design technique यहाँ काम नहीं करेगा, आप simply बोल सकते हो I will perform end-to-end testing to understand the flow, okay. आप यही बोल सकते हो, ठीक है. तो आप इसमें यूजेबिलिटी ये चीजें बोलना तब सही है कि when you know the requirements. As we don't know the requirements, we just try to Right. find out, go through the end-to-end testing so that you can understand the flow. You try to understand what is the exactly application. So उसके लिए end-to-end touch करना बहुत जरूरी होता है. इतना Right. आंसर आई थिंक उसके लिए इनफ है, ठीक है.
So as you say that you are reviewing the test cases, right? Mm-hmm. So while you are reviewing the test cases, what parameters come into your mind? Let's suppose you are reviewing my test cases. Mm-hmm. Which are the different parameters will come into your mind? Um, yes. First, I will see that if you are writing the test cases, it step by write it. First of all, I will check that. Then I will check that the whatever the test cases you write is for that particular requirement or not. Then how many test cases you are writed for the one requirement or for that one scenario? How many test cases you are writed? Then I will check that there is any spelling mistake or is there any duplicate test cases you are writing. Uh, yes, sir. These parameters. Okay. देखो उसको राइटेड नहीं रिटर्न बोल देने का, ठीक है, रिटर्न वर्ड है यहाँ पे उसके लिए। Written. ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें होता क्या है, आपने जो बताया पैरामीटर्स ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेक श्योर दैट उस बंदे ने, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप मेरे टेस्ट केस रिव्यू कर रहे हैं, क्या मोदी ने कवरेज किया है, लाइक वेदर दैट टेस्ट इज डन फॉर रिक्वायरमेंट, क्या पूरा कवरेज हो रखा है रिक्वायरमेंट का, ठीक है, दैट इज द वन थिंग। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि उसका टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स बंदे ने यूज किया है नहीं, टेस्ट केस डिजाइन या सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए हैं, देयर शुड बी अ टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स यूज अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर एरियाज। कॉर्नर एरियाज मतलब जैसे घर में कुछ कॉर्नर एरिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम घर के किसी कॉर्नर एरिया में जा नहीं पाते, सामान रखा रहता है। सो सिमिलर वे कॉर्नर एरियाज कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, दैट इज आल्सो द थिंग, ठीक है। ये आप मेक श्योर करोगे कि उसने इम्पोर्टेंट, देन अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट सिनेरियो उसने कवर किए नहीं किए, दैट यू कैन से दैट आई विल लाइक, आप इसमें ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सकते हो, या इन माय टीम देयर इज वन प्रेशर who's new joinee, so I'm used to doing this test case review, so mostly what I did, फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि I'll check that the coverage apart from, आप कैसे बोल सकते हैं, apart from their spelling mistake, grammar mistakes, I will make sure, मतलब ये तो मैं करती ही हूँ, इसके अलावा आप ऐसे बोल रहे हो, मतलब ये तो बेसिक है, इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि उसका कवरेज है या उसने टेक्निक्स यूज किए हुए हैं, एंड क्या कॉर्नर्स कवर कर रहा है, किस कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज उसने कवर किए हैं, प्रायोरिटीज वाले कवर किए हैं, that all come into this one. Okay, Right, sir. okay. Okay, because आपका एरिया सिनेरियो वाला है, so we'll focus more on scenario, ठीक है। Just I want to know क्या आपके लास्ट मॉक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कवर हुआ था, रिलेटेड क्वेश्चंस? Yes. बाकी सारे क्वेश्चंस कवर है, राइट? डेटाबेस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एपीआई, ओके, Yes. fine. Okay, let's suppose today is Friday. Let's suppose today is Friday और आप काम कर रहे हो and you found like one critical bug. Critical bug आपको मिल गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट में, एंड आपने वो बग लॉग भी कर दिया, you did log for that bug and you asked that team like next Tuesday we have release, can you please fix this bug as soon as possible? आप उनको कह रहे हो कि भैया आज फ्राइडे, ट्यूसडे रिलीज है, इसको जल्दी फिक्स करो। So development team say that this will take time. This will take time as this is a complex critical bug. This will take time. So then what is your approach in that case? How will you manage your task and all? Okay. First I will tell to the developer that whatever the defect I raised, this is important defect and another test cases are dependent on that defect. So before you are not fixing that defect, I'm not going to execute the another test cases. So as soon as you should fix that defect first. He's saying that, yeah, I'm taking this as a priority, but however this is a critical, I will need a time. वो बोल रहा है ठीक है, आपकी बात में एग्री करता हूँ कि इसे मुझे प्रायोरिटी पे लेना है और मैं इसे ले भी रहा हूँ प्रायोरिटी पे, बट ये कॉम्प्लेक्स रहने की वजह से मुझे इसे फिक्स करने में टाइम लगेगा। इन दैट केस हाउ यू मैनेज योर वर्क, आप अपना काम कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, then I can check that how many test cases are dependent on that defect. I make it different. I just to make another section for those test cases,
and I execute those test cases which are totally independent, and thus I can manage my work, sir. Okay, now there is a twist in this scenario. Let's say वो बंदा बोल रहा है कि Pallavi, I will give you this fix on Saturday. आपको ये bug मिल जाएगा fix करके Saturday को. So Next what you Saturday, will do this next day. Saturday? Yeah, next day, yes. Which is your week off. Saturday and Sunday is your week off. So how you will manage? Like either you will work on Saturday or you will say that no, you need to fix today. Or आप उसे बोलोगे I will work on Monday on this. How you manage this? I can say, okay, fine, I will work on Saturday. Once in a while, you can work on Saturday, right, sir? If that defect is important and you are very near to your deadlines of that work, your sprint is almost to the end. So you have to work on the Saturday. Okay. ठीक है, ये वाला अप्रोच आपका करेक्ट है, बट लेट मी ऐड यू समथिंग इनटू योर आंसर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने फ्राइडे बग रेस कर दिया है, दिस गाय इज सेइंग दैट कि सैटरडे को वो आपको फिक्स करके देगा. हाउ यू मैनेज योर वर्क? तो आपने कहा कि मैं जो डिपेंडेंट नहीं वो एग्जीक्यूट करूंगी. दैट इज वेरी गुड. इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो डिफेक्ट है उससे रिलेटेड टेस्ट केसेस मैं तब तक लिख के रेडी रख दूंगी. Like by the time I will keep the test cases which is ready to the related to that defect, I will keep it ready. ठीक है, उनको मैं ready रख दूंगी because once that defect come, I have to execute that dependent test cases. यानी उससे related जो test cases, if I have already that test case, well and good. If not, I need to be write it and make sure that if there is an impact, अगर उसका कहीं और भी impact हो रहा है, वो भी regression वाले test cases यहाँ मैं add करूंगी. That is the like इसमें add on है. Again मैं add on ही दे रहा हूँ आपको. I didn't say that कि something wrong. I'm saying that add on चीजें हैं. Yes. Okay, so what is traceability matrix? Traceability matrix, we are preparing for the checking that there is any missing test cases, any duplicate test cases. It is a mapping between the requirement and the return test cases. So as per your calculation, how much time you required to prepare a traceability matrix? How much time you needed? It takes not that much of time, sir. In a one day, we can make it the traceability matrix. Okay, what is the things required to prepare a traceability matrix? We prepare the traceability matrix into the Jira, sir. Okay, So, but what are the different things you require to prepare it? The return test cases and the requirements, sir. Okay, so you are saying that in a one day we can easily prepare this traceability matrix, right? Yes, sir. Okay. So practically, What? can we means really can we prepare that traceability matrix practically? Yeah, we can prepare. It's depend upon. देखो अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना तो नहीं हो सकता. तो आप यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर दे दो. ठीक है, मतलब आपका आंसर गलत नहीं है इसलिए मैंने आपको करेक्ट नहीं किया. आप इसमें बोल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन लाइक if that project is big, if 500 600 test cases are there, then it might take a time. But if test case count is less or requirement count is less, then we can easily finish this in one day. Depends, like it depends upon like how complex and how many numbers of test cases and requirement we have. आप इन जनरल बात कर दोगे उसके साथ कि ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक ही दिन में हो गया 2-3 दिन लगेंगे. ठीक है. Yes. Okay. Apart from this, let's suppose you already did testing in SIT, right? You did testing in SIT, that build is moved into UAT and everything is good. But when that build is moving into production, okay, it's showing they face a bug. They are facing bug. Okay. And as production team is not allow you to provide their database access or any access. Okay. How you debug that bug? Okay. Sir, I think I wanted to do the root cause analysis for that. I'm going to check that what is the reason behind that the bug is coming into the production.
For that, I need to check my requirements, the writing scenarios for the test, as well as I have to check the test cases which already executed. Everything is I wanted to check, sir. And yes, sir, I go for Okay. the root cause Okay. analysis What first. are the different things you will check? Can you repeat it again? I will go for the root cause analysis. I'm the whatever the defect is comes in, I check that the defect is related to the which requirement. Then I'm going to check my requirements, my whatever the possible scenarios I have already written for that requirement. I'm going to check my test cases. Is there any mistake, or is there any environmental issue? Is there the bug is not debugging? Okay. I will check that. So Okay. Root cause analysis is the correct answer. But the one of the point is like you say that you will check that कि ऐसा नहीं कि आपने ही आपके mistake से ही कुछ bug miss हुआ है. You will check that whether it's an environmental issue. That is one thing. You will check the browser compatibility. Might be possible that our client is using old browser or a browser which is not mentioned in the requirement. ऐसे ब्राउजर यूज कर रहा है जो अपडेटेड नहीं है या फिर कोई और जो हमारे रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है. right. तो ये चीजें आप उसमें देखोगे. करेक्ट. Right. Okay, so now there is a twist. You come to know that bug is not actually bug. अब प्रोडक्शन में क्लाइंट ने तो दे दिया बग, आपको पता चल रहा है वो बग नहीं है. द प्रॉब्लम इज दैट क्लाइंट इज नॉट वेल ट्रेन्ड. मतलब ये बंदा पहली बार अपना नया एप्लीकेशन यूज कर रहा है. क्लाइंट is not well trained. He's not aware about that functionality. So he simply draft a mail कि Pallavi, this is the bug. So he's not aware कि ये बाबा ये bug नहीं है, ये तो functionality है. Just because उसको ट्रेनिंग मिली नहीं है या उसके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली. Okay. So in that case, what you will do? In that case, what should I do? Yeah. Can I ask the customer to share his screen with me? Then I can show the demo to him. Okay, demo in the sense which kind of demo? Whatever he think that there is a bug, I can show him that by using that functionality that this is not the bug. This is actually the functionality of that application. See, sharing screen and explaining him, that is a good approach. Okay. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एज यू कम टू बंदा ट्रेन नहीं है, फ्यूचर में भी ऐसी चीजें करेगा वो. इन दैट केस यू आस्क योर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट टीम, आप अपने लीडर्स को बता सकते हो आवर क्लाइंट इज नॉट वेल ट्रेन, व्हाई नॉट वी प्रोवाइड देम अ ट्रेनिंग, डेडिकेटेड ट्रेनिंग. क्यों ना हम कुछ डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और शैल वी प्रोवाइड हिम सम डॉक्यूमेंट्स सो दैट ही कैन, है ना, मतलब वो अच्छे से गो थ्रू कर लेगा एंड ही अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनलिटीज. यस, श्योर. ये अप्रोच आप रख सकते हो यहाँ पे. यस यस, राइट सर. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया? Acceptance criteria is a checklist for the user story. Means so it is a condition you are applying to that user story. That is a acceptance criteria. Means I don't know. No, your answer is correct. Checklist मतलब किस बेसिस पे आप उस यूजर स्टोरी को पास या फेल डिसाइड करोगे. मतलब एक रिक्वायरमेंट आपके पास आई है, आप उसको कब पास बोल सकते हैं कि हाँ ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है. सो दैट इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि मतलब आप उसे कब एक्सेप्ट करोगे. राइट. एक्सेप्ट तब करोगे जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है. राइट 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 राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी कोट के शर्ट में जाते हो, मतलब क्लॉथ शॉप में जाते हो जहाँ पे कपड़ों की दुकान में, आप अपने मतलब कोई भी शर्ट या जो भी आप परचेस कर रहे हो, आपके दिमाग में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है. इट शुड बी लाइक प्रॉपरली फिटिंग आना चाहिए, कलर शुड बी डिसेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल, स्मूथ कपड़ा होना चाहिए, क्वालिटी इज गुड. सो दैट इज समथिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज गोइंग इनटू योर माइंड. तो जब तक वो पूरा नहीं होता, आप यू नॉट बाय एनीथिंग. राइट. और इफ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ डिस्काउंट्स, हाँ, जब तक ये बंदा मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं देता, आई विल नॉट बाय, आई विल डू द बार्गेनिंग.
The similar way for user story, also some acceptance criteria. When that user story meets that criteria, then only this happens. Okay, then we can say that Yes, okay, sir. this user story is good to go. Yes. Okay, so So let's for that, suppose sir, there is any example in testing? Means suppose is there is any condition that the suppose customer want to the login with the username password, and also he wanted to use the captcha. So this is the acceptance criteria, sir. acceptance criteria here, you can say that, like for example, if you're working on a login page, let's suppose username and password is there and you're working on it, Hmm. there is acceptance criteria. You can say that user should be done login only with the valid credentials. That is the first and हाँ, important. Means right. अगर वो valid है तभी login होगा. So उसके basis पे आप invalid भी define कर सकते हो. If one of them is wrong, either username or Hmm. either password, user should not be able to log in. That is second. Third, Right. if user has taken a more than 3 attempt, his account should be blocked for 24 hours. This is also. तो जब तक ये सारे पास नहीं होते, देखो ऐसा नहीं कि एक पास हो गया तो मैं बोलूंगा ये लो डाल दो प्रोडक्शन में. नो, until and unless all acceptance criteria. Let's suppose if I have written 4, until and unless Hmm. that 4 has been completed, तब तक हम उस यूजर स्टोरी को आगे पुश नहीं करेंगे. ठीक है? Right, sir. So Okay. customer provide us that acceptance criteria to us, Yeah, or definitely they are providing. They are only providing. Customer in the sense, business analyst, stakeholder, उन्होंने यूजर स्टोरी में लिखा होता है. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होता है. एक्सेप्शन क्राइटेरिया 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स है कि हाँ ये है, और आपको वो चेक करना है कि वो मीट हो रहा है नहीं. ठीक है? right, sir. So my next question is, let's suppose you are working for a project and there is a release on next Saturday. Okay. So and coming Monday there is a code freeze. अभी आप में से बहुत लोगों को कोड फ्रीज नहीं पता होगा. कोड फ्रीज इन द सेंस क्या होता है, जैसे मानो अभी इस सैटरडे, आने वाला सैटरडे बात करें, आने वाले सैटरडे को, आज क्या है, आज थर्सडे. Thursday. ओके, लेट्स से कि आने वाले ट्यूसडे को रिलीज है, आने वाले ट्यूसडे को. लाइक हमारे पास अभी Okay. फ्राइडे है, मंडे है, एंड टुमारो इज कोड फ्रीज. कोड फ्रीज मतलब क्या, कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में हम कोड फ्रीज करते हैं तो कोई भी नया कोड वो नहीं लेता. जहाँ जितना कोड है उतना ही सेव करता है, उसके आगे वाला कोड वो नहीं लेता, कोड फ्रीज करता है. वाई? ये हमेशा हर कंपनी फॉलो करती है बिफोर गोइंग टू रिलीज. रिलीज जाने से Okay. पहले वो एक डेट दे देती कि हाँ इस डेट तक आप जितना भी कोड डालोगे हम उसे ले लेंगे, उसके बाद का कोड नहीं जाएगा until and unless that release is going to be complete. ठीक है? Okay. So that is code release for every one of you guys. जितने भी आप यहाँ हैं, आप ये कोड फ्रीज अगर वर्ड आता है तो याद रखना है कि ये होता है. देन ये कोड फ्रीज होगा. देन उसके बाद चीज क्या होगी कि लेट्स सपोज कि कोड फ्रीज आपका जो है मंडे को है. ठीक है? Mm-hmm. ट्यूसडे आपका रिलीज है, मंडे आपका कोड फ्रीज है, एंड योर क्लाइंट कम विद न्यू रिक्वायरमेंट टुडे. आपका क्लाइंट आज नया रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है. Mm-hmm. व्हाट विल यू डू फॉर दिस? आप क्या करोगे इस बीच? ओके पल्लवी, यू कैन कंटिन्यू योर आंसर. Yes, sir. Sir, even though the code is fixed, as you said, but the new requirements comes in, so there is no problem, sir. I think we can go with that requirement. We means I'm going to understand that requirement. I'm going to write all the possible scenarios for that requirement. I'm writing the test cases for the requirement, and I. Uh, I make sure that I will prepare for that new requirement. Then once the problem of the fizzing code is resolved, then we can go for that new requirement again. ऐसा नहीं होता है पल्लवी. कोड फ्रीज इसलिए हो रहा है Okay. कि उसके पहले का कोड है वही रिलीज में जाएगा. अगर ट्यूसडे रिलीज है तो मंडे को कोड फ्रीज हो रहा है, मतलब मंडे तक का कोड ही वो कंसिडर करेंगे. सो इट मींस आपके पास आज का थर्सडे है, फ्राइडे है और मंडे है. Mm-hmm. मतलब Okay. मंडे तो फ्रीज है, तो 2 दिन है. इस केस में जब क्लाइंट आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आया है तो Mm-hmm. आपका अप्रोच यहाँ क्या होना चाहिए कि क्या सच में वो रिक्वायरमेंट इतनी जरूरी है कि इसी रिलीज में पुश करना है. बिकॉज थिंग इज हाँ. दैट डेवलपर के पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा और आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कोडिंग और टेस्टिंग के लिए. Yes. And if that requirement is complex or that requirement is dependent on running requirement जो already आप push कर रहे हो, उसमें कहीं dependency है क्या?
Right. तो वो बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? Right, sir. Yes, if it's that much important, critical, then you don't have a choice. You have to be Yes, sir. pushing. Okay. But if you feel that is not important, you can simply request developer, your business analyst, your client, that I don't think this is that much important. क्योंकि आप ढाई गड़बड़ में उसको टेस्ट करोगे, कहीं कुछ उसके वजह से बग हुआ तो एंटायर आपका जो करंट एप्लीकेशन इम्पैक्ट कर जाएगा, राइट? Right, sir. That Means is you one have thing. to wait for that. The code is no yet not resolved. Means you नहीं, have to आपको wait. वेट नहीं करना है, आपको समझना है कि वो रिक्वायरमेंट उतनी जरूरी है क्या, एंड देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन. अगर रिक्वायरमेंट जरूरी है तो आपको उस पर काम करना है. ट्राई टू फिनिश इट बाय एक्सटेंडिंग शिफ्ट एडिशनल रिसोर्सेज. इफ इट नॉट, यू हैव टू कन्विंस योर क्लाइंट एंड से दैट नो, वी आर नॉट डूइंग दिस, बिकॉज आफ्टर कोड फ्रीज तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट? Right. ओके, सो लेट्स सपोज, जैसे आपने बताया कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज नथिंग बट अ चेकलिस्ट, राइट? व्हाट डू यू थिंक, is acceptance criteria consist of non-functional requirement as well? No, sir. I Why? think because non-functional requirements are it's the uh, how we can say that. Sir, I don't know. I think no, sir, because only we can means non-functional requirements as per our acceptations or the or we can see the how application is respond. It's not about the client requirements. So you mean to say that will not add into acceptance criteria? I think so, sir. I don't know exactly what. Okay. I thought so. देखो इसको So tell me, ऐसे sir. क्वेश्चंस को ना, या श्योर श्योर, ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर दो. आंसर ऐसे दो कि ना आप उस नदी में हो ना आप इस नदी में हो, या फिर आपको कि दोनों नाव में आपको पैर रखना है. कैसे बताना? आप यहाँ पे आंसर दो कि डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट टाइप. ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के टाइप पे, ठीक है? कि क्या उस यूजर स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. इफ दैट प्रोजेक्ट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल अगर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं फंक्शनलिटी ऐसे बता रही कि विद इन सेकंड ये पेज ओपन होना चाहिए, विद इन सेकंड सर्च चलना चाहिए, विद इन 2 सेकंड बंदा नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, बिकॉज ई कॉमर्स इज लाइक वेयर लॉट ऑफ पीपल आर एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म. In that case, yes, non-functional requirements are very important. But for banking kind of application, we can say that no, it's not that much important because there is no heavy flow. इतना flow नहीं है. But it would be good. लेकिन ये हमेशा अच्छा है कि अगर non-functional requirement है तो it's good. And in one line, I can say that yeah, non-functional requirement may be a part of acceptance criteria. वो होते हैं, ठीक है? We can't say they're not because sometimes बहुत matter करता है चीजें, ठीक है? Okay. So let's move to the SQL related. As already SQL questions asked by Darshan sir, but still because I already covered 9 to 10 scenarios, I guess. So in SQL, let's suppose you have done database testing. Okay. Can you tell me a scenario where for your IB project, you have done database testing and you found a bug which is related to you, like related to your project on any bug? Means for any particular requirement or any particular module? For anything like related to your project, you found any database related bug? Yes, sir. There is a requirement for the order type, and that is the one cancel another order, and in that order type we are adding the uh, 3 tabs, like one is the market price, the buy price, the stop loss price, and the target price. Okay, so whenever we set the stop loss price, suppose the market price is 100 and the buy price is a 90, right? Then automatically our stop loss price is rupees 10.
So it automatically show me to the 80 rupees, right? So it not showing me to the 80 rupees. It shows me to 100 only. So this kind of bug I will found from as a database testing. It not fetching that particular amount. ओके, करेक्ट है। आप डेटाबेस टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, जैसे अभी आपने बताया कि कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही हूँ या पर्टिकुलर प्राइस पे बाय किया है मैंने, एंड दैट प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। लेट्स सपोज इफ आई बाय ऑन 100, इट्स नॉट शोइंग 100, इट्स शोइंग 99 और 101। डेट इज रॉन्ग, status is wrong. For example, status should be order executed, complete should be there, but वो pending दिखा रहा है, right? ऑर्डर्स के फ्लैग्स गलत अपडेट हो रहे हैं। फ्लैग्स रहते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी तो फ्लैग 0 हो जाए, नहीं एग्जीक्यूट हो गया तो 1 हो जाए, बूलियन वैल्यूज में रहता है, फ्लैग्स इज नॉट अपडेटिंग करेक्टली। ठीक है, सो ऑल दिस योर आंसर इज करेक्ट, यू कैन से दैट इस तरीके से ये होता है। सो as in your introduction, I have to come to know like you following agile. So what do you think, what is an importance of daily stand-up meeting? Yes, sir. Whatever we do yesterday and whatever the issue we are facing while we are working, everything is discussed in the daily status meeting. If there is any problem about the defect, it's suppose the defect is valid and the developer is not accepting that defect, we should raise that point into that daily status meeting. So I think the daily status meeting is important, sir. Okay, okay. Can you give me any example for a combination of group by and having clause? Combination of group and having. Yes, sir, I can give. Can I tell you the syntax for that, or Yes, give you the syntax, example? both. First example, then syntax. Okay. Okay, Suppose you have to. let me give you an example. Okay. एक table name is as a India. Table name is India. Okay. Column consists of ID, Aadhaar ID. This is first column. Aadhaar ID. Are you writing somewhere, Pallavi? Can I write? Yeah. Yes, please. Okay. Yes, sir. The table name is India. Column name is Aadhaar ID. Yes. Then name. Then phone number. Yes. Then we can say that gender. Then we can say that age. Then city. Okay. Let's suppose कि आधार की सारी डिटेल्स यहाँ पे है, लाइक आधार आईडी है, बंदे का नाम है, नेम है, फोन नंबर, उसका जेंडर है, उसकी एज एंड सिटी है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1000 of crores of डेटा, बहुत सारा डेटा इसमें है। नाउ आई वांट टू नो जेंडर वाइज काउंट ऑफ लाइक एवरीवन। मुझे जेंडर वाइज काउंट चाहिए, लाइक हाउ मेनी मेल्स आर देयर and how many females are there. Okay. Or I can say that, can you give me a count age wise? I want to know age 1 के कितने, 2 के कितने, 3 के कितने, like till 100 जितना भी age है. I want age wise count. Not gender wise, age wise. Not gender, yeah, age wise. Okay. Select age from India, group by age means column name into bracket column name, having count age semicolon. Can you repeat it again? Let me write it. Yeah, select age from India, group by age, having count, group by age, having count, into bracket star, bracket, and into again a single bracket column name age, bracket complete semicolon.
select age from India, group by age, having count age. Yes, sir. Right? Select age. Okay, age wise count. Having count. Something is wrong here. Like you should need to use count at the first attempt. जिस चीज को काउंट करना है आपको स्टार्ट में डालना पड़ेगा. Okay. Yeah. There is minor mistakes into this. Minor mistake. I think so. Okay. Okay. Apart from this, Pallavi, let me ask you one more SQL question. Okay. I want to find out duplicate records from same table. Duplicate from same table. Okay. For that, select Aadhaar ID from India, group by Aadhaar ID, having count into bracket Aadhaar ID greater than 1 semicolon. Greater than 1. Can you repeat it again? Yes. Select Aadhaar ID from India, group by Aadhaar ID, having count into bracket column name Aadhaar ID greater than 1 semicolon. So like in this way, you are getting count more than 1. So you are getting this duplicate records. Yes. Yes. Yeah, Sheetal, your answer is also correct. She also answered. Fine. So let's move to the HR related questions. Yes. Please answer, smartly answer करना. ठीक है? HR लोग बहुत चालू रहते हैं. करते कुछ नहीं है, काम लगाते हैं. Okay. So HR related. Fine. So Pallavi, as I can see that you are having 3+ years of experience. Why you are still in the same company? Actually, I'm searching the job from last 6 months, but as you know, that organization want the immediate joiner. But there are some responsibility in my organization, so I can't resign so I can't resign it right now. Basically, मेरा question ऐसा होना चाहिए था कि why you didn't switch? Like why you are working long being this company? I think ये question है. ये question थोड़ा frame गलत किया मैंने. ठीक है. So you didn't get a time. Okay. Okay. I can see that your package is low compared to market standard. Is there any specific reason behind this? I think when I joined the organization, so my starting package is 3.2 LPA. But as I got the appraisal for every Your year, now starting it's package 4.8 is? Okay. 3.2. My starting package is 3.2 LPA. Now it's a 4.8 LPA, sir. I also got the appraisal for the 3 years. So I think it's up to that mark, sir. It's not that much less. चैलेंज कर रहे हो इंटरव्यूअर को. वो बोल रहा है अप टू द मार्क नहीं है और आप उसे बोल रहे हो कि मुझे लगता है अप टू द मार्क है. तो ठीक है, आप जो आंसर दे रहे हो सही है. उसमें आप बोल रहे हो कि हाँ ये अभी कम लग रहा है. बेसिकली व्हाई? बिकॉज व्हेन आई जॉइन आई वाज जॉइन ऑन लो पैकेज. दैट इज द ओनली रीजन. क्योंकि मैंने ज्वाइन ही कम पैकेज पे किया था. बट कंपेयर टू मेरा ज्वाइनिंग का पैकेज से ये पैकेज इट्स लाइक यस आई एम ऑन अ गुड पैकेज. बट हाँ, अगर आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो या यू आर करेक्ट. आपसे गलत भी नहीं बोल रहे हो और आप उसे ये भी बता रहे हो कि भाई मैंने ज्वाइन ही कम में किया है. तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैं पहुंच चुकी हूँ. बट आप ये मत बोलना कि आई थिंक इट्स गुड बोल के. ठीक है. ओके. सो we what package you are expecting from here? I'm accepting 6.5 to 7 lakh. 6.5 to 7 lakh. Okay, what if another company will provide you 10 lakh package? Then It's not about the package only, sir. I just wanted to see the culture of the organization, how it far from my current location. I just wanted to check that everything, and thus I selected the company. देखो इस केस में ना आपको उसे भरोसा देना है कि भाई पैसा ही मैटर नहीं है. जो आप अभी ट्राई कर रहे हो दैट इज करेक्ट. लाइक यू कैन से दैट या सी माय प्रेफरेंस इज नॉट ओनली फॉर मनी. इट्स लाइक आई आल्सो लुकिंग फॉर सम वर्क लाइफ बैलेंस as I have some dependency in my family as well.
my parents are there, or you can say that my child is there, जो भी आप बोल सकते हो उसमें से. So I feel not only my career wise, but looking at another points, I feel this is a good company. No doubt if I get an opportunity from other company, I need to check with them as well कि ये points उसमें भी है क्या. Then only I took decision. But if I will not judge only on the basis of money. आप उसको सीधा बोल रहे हो कि मैं सिर्फ पैसे के बेस पे जज नहीं करूंगी, अगर ये चीज भी है क्या उसमें मैं जज करूंगी. फेयर इनफ बोल रहे हो उसको कि हाँ अगर ये मेरे को इतना पास है, घर से पास है, वर्क फ्रॉम होम है, ये चीजें भी मैं देखूंगी है तो फिर देन आई विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली. ओके ओके. सो you will join immediately or like how many days of your notice period still you have to serve? Actually, officially it's 1 month notice period, but I can join within a 15 days. Why your notice period is 1 month? I can see that everywhere it's like 3 months of notice period. In your case only, I can see that it's 1 month only. Why? I don't know, sir. देखो ऐसा बोल सकता है वो, आप उसको बोलने का कि देखो 3 months कहाँ होता है अगर आप कंपनी के पेरोल पे हो, कंपनी के ही एम्प्लॉय हो. 1 month कहाँ पे होता है जब आप थर्ड पार्टी पेरोल हो, मतलब कोई और कंपनी अपना बंदा किसी और कंपनी के लिए भेज रही होती है. तो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए कंपनी ने हायर किया है और ए कंपनी मुझे अपना बंदा बोल के बी में भेज रही है. बी कंपनी मेरे को पैकेज 80,000 दे रही है, लेकिन मेरी कंपनी मेरे को 60 दे रही है, मतलब 20,000 वो अपनी जेब में डाल रही है. दैट इज थर्ड पार्टी पेरोल बोलते हैं. दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी. कह सकते हो कि आई एम वर्किंग ऑन अ थर्ड पार्टी पेरोल. So in third party payroll, notice period is 1 month. Like here, that is a policy which we are following. I'm not aware about others. ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं. Okay, Pallavi, I'm done with your interview. Mark, you have any question for me? Yes. I just wanted to know that in your organization, is there any training for the test engineer? Is there any high level training that you are giving to your test engineers? Definitely we have. Okay, good question. ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन रह गया मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ. टेल मी योर वीकनेसेस. एक नहीं दो हैं क्वेश्चंस मेरे दिमाग. टेल मी योर वीकनेसेस. Okay. Sometimes, sir, I'm very busy with my work and I'm focusing only on my work. And because of that, I don't have enough time to give my friends, to my families. I think this is my one of the weakness, sir. तो इसमें वीकनेस क्या है? टाइम मैनेजमेंट. Huh, not exactly time management, but I'm very conscious about my work and suppose the work is not completed within a time, sometimes I got anxiety for that. So I think this is my weakness. ठीक है. देयर इज वन पजल फॉर यू. ठीक है, कुछ लोग पुरानी बैच से हैं, ऑलरेडी अवेयर. सम टाइम पजल भी पूछते हैं, अच्छा लगता है अगर पूछते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट आप इंटरव्यू क्रैक ही कर चुके रहते हो, लास्ट राउंड में ही आता है. पजल इज लाइक देयर इज वन लिफ्ट, देयर इज वन पर्सन हु इज लिविंग ऑन 13th फ्लोर. ठीक है, लिसन केयरफुली, प्लीज लेट मी नो अगर ये रिपीट हो रहा है तो. आपने अगर सुन, It's repeated, huh? repeated. Okay, let me ask you another one. I have couple of this. So let's take an example. ये वाला आई थिंक मैंने पजल बैच को पूछा ही नहीं है. लेट्स सपोज देयर आर two brothers are there. Okay. Those who are living in Dubai and their father is like about to die, like last मौके पे हैं, मरने वाले हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी की बिल लिख रहे हैं. लेट मी नो अगर ये भी रिपीट हुआ है तो. पूरी प्रॉपर्टी की बिल लिख रहे हैं, तो उन्होंने उसमें बिल क्या लिखा है, मतलब जायदाद में क्या लिखा है, आई विल गिव दिस प्रॉपर्टी टू ओनली दैट पर्सन हु विल कम लास्ट. जो मेरे पास लास्ट में पूछेगा दोनों में से. ठीक है, उस बंदे को मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दूंगा. और ये भी कहा कि आप दोनों को ऊंट पे रेस लगा के आना होगा. ठीक है, लेट सपोज कि ए लोकेशन में उनके डैड रहते हैं, बी लोकेशन में दोनों हैं, कि आपको उनकी रेस लगा के वहां तक आना है. जो भी लास्ट में आएगा उसको क्या मिलेगा, यू विल गेट द प्रॉपर्टी अपने डैड की. आप दोनों को पता है कि भाई पहले पहुंच के तो कुछ मिलना नहीं है. दोनों भाई लोग क्या कर रहे हैं, ऊंट पे बैठे हैं, अपना ऊंट को एक जगह पे बांध दिया है, खा रहे पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
अब कोई भी रेस आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बिकॉज ही नोज दैट कि अगर वो पहुंच गया तो ही विल नॉट गेट एनीथिंग। दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर देम कि भाई रेस खत्म करें तो कैसे करें। देन वहां से एक बंदा पास होता है, देयर इज वन बुजुर्ग आदमी पास होता है, बोलो बूढ़ा आदमी, और उन दोनों को कुछ बोलता है, कुछ तो मंत्र उनको कानों में वो देता है या फिर कुछ उनको बोलता है। देन बोथ ऑफ ब्रदर्स लाइक इमिडिएटली खड़े हो जाते हैं, ऊंट लेते हैं, भागने लगते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, वो बूढ़ा क्या बोल के गया कि ये दोनों खड़े हो गए और रेस करने लग गए? व्हाट डू यू थिंक, क्या बोला होगा? ओके। um I think he gives some suggestions to them that you go to the home when your father is sleeping, and you can sit uh, to behind the bed. Then that when he wake up, he can't see you. So, and whenever he see you, he can see you both at one time. So might be he get confused. Father get confused. Who is come first and who is come last. लेकिन विल में तो ऐसा नहीं लिखा है, विल में तो लिखा है कि जो लास्ट में आएगा उसी को मिलेगा। तो एज पर विल तो नहीं है ये, Okay. तो वो लोग तो जाएंगे नहीं। कुछ तो ऐसा बोला बूढ़ा Okay. कि जिस वजह से दोनों निकल पड़े। माय क्वेश्चन इज कि बूढ़ा क्या बोला, कुछ तो बोला। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को मुंबई के इंटरव्यू में पूछा गया था, एंड स्टिल आई डोंट नो कि इसका रियल आंसर क्या है, बट जो आंसर मैंने दिया था, दैट इंटरव्यू वाज अ लेडी 42 एज की थी। शी सेड दैट दिस इज करेक्ट, बट शी आल्सो टोल्ड मी हाउएवर देयर इज अनदर आंसर इन माय माइंड, बट व्हाटएवर यू आर टेलिंग मी दैट इज आल्सो करेक्ट। तो मैंने उसके बाद कभी उसे गूगल करने की ट्राई भी नहीं किया कि इसका रियल आंसर क्या है, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद माय आंसर। सो या यू Okay. कैन टेल योर वन व्हाटएवर यू फील। Mm. Uh, okay. So I think the brothers are discuss mutually, and one can say that okay, I stay here. You go first, and whatever in the will, um, the one who still is there, he get everything, right, sir? And then he can mutually म्हणजे नहीं देखो दोघं भाई, मिळून ऐसे घेऊ समझ लो शकतात. कि दोनों लालची हैं, लालची समझ लो। चलो डेट करते हैं, दोनों लालची, कोई नहीं चाहता कि अपने में का कुछ दे। और क्या भरोसा दूसरा वाला लेके पहले वाले को बाबा जी का ठुल्लू दे दे तो फिर बोलेगा नहीं देता, क्या कर लोगे? कैन ही ट्रस्ट ऑन अनदर वन? नो, आई डोंट थिंक। उसे ट्रस्ट नहीं करेगा, बोलेगा भाई तू जा, इससे अच्छा तू चले जा, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, अगर इतना ही तेरे प्लान में दम है। Okay. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है? ठीक है, पजल्स आते हैं, एंड जब आप पजल के पास हो तो समझ लेना ऑलमोस्ट 80-90% आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। पण सर याच्यामध्ये काय लॉजिकल विचार करायचा आहे की यस, लॉजिक हा आहे की want your असं property, काही want you. we both don't want your property, we want equal. So sweet of you ज्योति, but इस जमाने में ऐसे लोग नहीं हैं, वेरी फ्रैंक, बहुत कम लोग हैं। योर आंसर इज वेरी डिसेंट आंसर। हाँ यही होता है ना, लड़कियां पापा को बहुत ज्यादा प्यार करती, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ आंसर इज कम। लड़कियों का तो पता नहीं क्या है, पहले ही बदनाम है हम लोग। ओके, एनी विच वे। सो इसमें लॉजिक ये है कि उस बूढ़े ने क्या बोला होगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है? कि बूढ़ा क्या बोला होगा कि जिस तरह से रेस स्टार्ट हो गई, किस तरह से रेस स्टार्ट हुई। रेस तो स्टार्ट हुई, किसी ने तो पूरा प्रॉपर्टी उठाया और किसी ने नहीं उठाया, कुछ लॉजिक हुआ जिसकी वजह से सब खत्म हो गया इशू। दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स कम बैक टू योर मॉक फीडबैक। देखो मैंने इंटेंशनली एक ही एरिया पे फोकस किया, दैट इज सिनेरियो, बिकॉज आई कम टू नो कि रेस्ट ऑल थिंग्स आर गुड, ठीक है? और टुडे आई हैव लाइक आस्क्ड ऑलमोस्ट 9-10 न्यू क्वेश्चंस। दोनों में रेस लगा के किसी और को प्रॉपर्टी दे दी। अरे नहीं वसंती, ऐसे मत करो, दोनों को ही लेने दो, उनमें से किसी को जीतने दो।
प्रियंका ने तो घोषित कर दिया, आई थिंक हिज डैड इज नो मोर. No, his dad is there.